Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be looking at a few elimination tricks that have helped me clear prelims. Now, for people who do not know me, let me introduce myself first. My name is Saurabh and I have given 6 attempts at UPSC and cleared prelims in all my 6 attempts. And in these 6 attempts, my score has been decently above the cutoff. For example, the 2022 exam, when the cutoff was around 87 marks in general category, I was able to score 120 marks. Similarly, in 2023 exam, when the cutoff was 75 marks, I was able to score 105 marks, which is 30 marks above the cutoff. And I believe the reason for me clearing the prelims all my 6 attempts has been my hold over these elimination tricks along with a good hold over the static subject. Now, to be very honest, even if you have prepared thoroughly, even if you have prepared to the T each and every topic, there won't be more than 30 to 40 questions which you will be able to solve based on your knowledge base. After these 30 to 40 questions, you will have to attempt 60 to 70 questions using some logic or using some elimination trick. And I believe there are a lot of people who have mastered this logic, mastered this elimination trick, and are able to clear prelims consecutively. Like me, I was able to clear prelims in all my 6 attempts. So I believe that mastering this logic, mastering this elimination trick will definitely help you score more marks, boost more your marks in prelims. So in today's video, I will be discussing these elimination tricks and the logic that you should use while solving the paper, so that you are able to increase your marks and you are able to boost your score. So these logics and elimination tricks are nothing but trying to understand the mindset of UPSC examiner, trying to understand the traps that UPSC examiner sets, so that we reduce our number of mistakes and we avoid these traps and increase our accuracy. Now, the first and foremost trick that is used, and which I believe most of the serious aspirants are aware, is that extreme statements are mostly wrong. For example, this question of 2024 prelims, if you look at this question, the first statement says that India does not import apples from USA. Now, this statement that it does not import seems to be extreme, right? It is extreme, and hence, using our logic, if we consider this statement to be incorrect, automatically we will reach to the answer. Now, let us cross verify the answer. That the answer says ki statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So let us read the second statement. The second statement says that in India, the law prohibits import of genetically modified food without approval of competent authority. Now, this is very logical, very general knowledge-based statement, and most of the people who are preparing will be aware that in India, there is a body called GEAC that approves all the genetically modified food, even if they are prepared domestically. So automatically this should be correct, and that again reconfirms our answer. So our logic that extreme statements are wrong holds here. Second example, again a question from 2024 prelims, where the first statement says there are no parables in Upanishad. Now this again is an extreme statement. Now there are a lot of Upanishads, right? There are a lot of Upanishads. Similarly, अब इतने सारे उपनिषद में किसी न किसी में एक आध तो स्टोरी होगी, किसी न किसी में एक आध तो parable होगा. So this seems to be extreme. If you eliminate this option, automatically you are able to eliminate two options, that is one only and both 1 and 2, and by this itself you are able to in, come down to the 50-50 chance. Okay, so again our logic stands here that extremes are incorrect. Again, now again, not necessary that you know this logic. Even if you are aware in your day-to-day life, a lot of people who are staying in Delhi and preparing must have visited Akshardham temple, right? और वहाँ पे जो रात को लेजर शो होता है, वहाँ पे there is a laser show of Kato Upanishad, where the children come and perform, and it is nothing but a parable only in Upanishad. So automatically this should be wrong. So you can use either the logic that extremes are wrong or your day-to-day observation, day-to-day life ka examples to eliminate the options. And second statement, Upanishads were composed earlier than Puran, which is general and a lot of people know. So this should be the right answer, and this is the right answer. Similarly, if you look at this question was asked, I believe, in 2017, where it is about Manipuri Sankirtana. Even if you are not aware in detail about Manipuri Sankirtana, if you
read about the statements given in the question. The second statement says that cymbals are the only musical instrument used in this performance. Now this again is extreme. Is it possible that there is only one instrument that is used in any performance? It sounds to be extreme. Now again, if you are eliminating this statement, automatically you are able to eliminate two options. Again you are coming down to 50-50 chance. So you can see, by eliminating extreme statements, you are increasing your accuracy, you are increasing your chances of getting answer correct. Now the third statement, it is performed to narrate the life and deed of Lord Krishna. Ab we all know Manipuri Sankirtana is related to Vaishnavism, so it should be correct. So automatically B becomes the right answer, which is the right answer. So the first and foremost logic to keep in mind is that extremes are always wrong when it comes to UPSC prelims. Now the logic behind extremes being wrong is that when an examiner is to set the paper, he or she has to give a detailed explanation about the options. Now in order to make a statement incorrect, the examiner tends to make it so extreme that no one can prove it otherwise. मतलब आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो देता है यूपीएससी. सो द आंसर शुड बी सच दैट अगर उनको कोई भी स्टेटमेंट गलत करना है, उसको इतना एक्सट्रीम कर दो कि कोई भी उसको गलत प्रूव ना करे. दैट्स वाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. अब इसका कोरोलरी क्या होगा? इफ एक्सट्रीम्स आर रॉन्ग, ऑटोमेटिकली जेनेरिक स्टेटमेंट्स विल बी मोस्टली करेक्ट. ठीक है, जैसे दिस क्वेश्चन of 2023 prelims, if you look closely to the question, it has four statements which say some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. So some mushrooms है. Seems that examiner is trying to make it so generic that it can stand true under any circumstances. अब इतने सारे मशरूम के varieties है, किसी ना किसी में तो ये प्रॉपर्टीज होंगी. So automatically these are very generic statement and all of them should be true. So this all four should be the right answer, and this is the right answer. Again our logic stands that when it comes to UPSC prelims, the generic statements tend to be true. Similarly again 2023 का ही question है which says that some microorganisms can grow in environments with the temperature above the boiling point. Again some microorganisms है. Similarly second statement says some microorganisms can grow in environments with temperature below freezing point. ठीक है. Third statement says some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. अब देखो यहाँ पे भी the examiner has tried to make it so generic that it seems true, that it should stand true and no one can prove it otherwise. So all the three statements should be correct by our logic, and C should be the right answer, and that is the right answer given by UPSC. So again the second logic stands true, that generic statements when asked in UPSC are mostly correct. Now the third logic or the third trick that I've used across my attempts is that whenever UPSC gives some data, some stat or some fact, it is mostly incorrect. For example, this question in 2017 that was asked in 2017 about National Investment and Infrastructure Fund. If you look at the second statement, it says that it has a corpus of 4 लाख करोड़. नाउ अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जब भी कोई डेटा फैक्ट पूछा गया होगा, इट विल बी मोस्टली इनकरेक्ट. सो अगर इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कंसिडर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, एंड अगेन यू आर कमिंग टू 50-50 चांस. आपका एक्यूरेसी का चांस बढ़ रहा है. नाउ UPSC has this peculiar habit of tweaking the data, making it incorrect, because if it makes data to be incorrect, automatically no one can cross UPSC, no one can challenge UPSC's answer. ठीक है, फैक्ट अगर गलत है तो गलत है, कोई भी उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता. इट मेक्स द टास्क ऑफ UPSC इजी. सो व्हाट UPSC हैज डन हियर इज कि जो 40,000 करोड़ का फंड है उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड करके 4 लाख करोड़ कर दिया है, जो गलत है. एंड अगेन it is an organ of Niti Aayog. Now if you have read about India National Investment and Infrastructure Fund, so it is not an organ of Niti Aayog. It is an alternative fund that is formed with under SEBI. So the answer should be D. And again our logic कि डेटा फैक्ट गलत होंगे, ये यूज़ करने से हम 50-50 तक पहुंच रहे. सो कीप दिस इन माइंड whenever you see some data or fact given in any statement in UPSC's prelims question, there are very high chances that it is incorrect. ठीक है.
Similarly, if you look at 2024 का paper, there's this question about European Parliament and its action regarding climate change. तो उसमें you can see this, that the first statement says European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. अब हमको पता ही नहीं है यूरोपियन पार्लियामेंट में, लेट अस कंसिडर कि हमको पता ही नहीं है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया है रिसेंटली. अब अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे, तो सेकेंड स्टेटमेंट सेज यू इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040. अगेन कुछ डेटा दिया है, कुछ नंबर दिया है, तो यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट ऑफ गिविंग सच डेटा टू बी रॉन्ग. चलो ये कंसिडर कर लिया. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेज एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप all of its own clean technology by that time. Doesn't it sound to be extreme? अब would it be possible for EU to generate all the new technology, to create all the new technology on its own? So it sounds to be extreme. So by two logics, that data is mostly wrong and extremes are mostly wrong, we can consider statement 2 to be incorrect. अगर statement 2 को incorrect consider करो, automatically you are reaching to the answer. So again, even without knowing anything about Net Zero Industry Act or EU's recent actions for climate change, for sustainable growth, you can reach to the answer. Now this is how UPSC tries to give you hints within the question paper, and if you are able to pick up these hints, automatically your score will boost. ठीक है. So keep this in mind. Data, fact, statistics are usually wrong when it comes to UPSC prelims. ठीक है. उसके बाद another logic especially applicable in economics का questions is that whenever there is a statement that says something has steadily increased or something has steadily decreased, it is generally wrong. Now if you look at this question about the Indian economy and post 1991 liberalization, the second statement says that the percentage share of rural areas in the workforce has steadily increased. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, steadily increased, steadily decreased, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो it is mostly wrong. If you consider this to be wrong, automatically you will see you are again eliminating two options and you are reaching 50-50. अगेन आपका एक्यूरेसी का चांसेस बढ़ गया है. तो just by knowing these tricks that such trend lines are mostly incorrect, you can again increase your accuracy. But one more caveat here: before using this logic, you should be aware about the basic trend lines of major things that are discussed in budget, like your GDP growth rate. Now if you look at GDP growth rate post COVID, you can see that GDP growth rate is steadily increasing, right? Even capital expenditure, if you look at capital expenditure, India's capital expenditure since 2020 till 2024 has steadily increased to 11.11 lakh crore recently. ठीक है. Similarly, India's fiscal deficit, if you see since COVID, India's fiscal deficit has steadily decreased. तो ये लॉजिक यूज करने से पहले बी अवेयर अबाउट द मेजर ट्रेंड लाइन्स दैट आर डिस्कस्ड इन बजट और इन इकोनॉमिक सर्वे एंड सी वेदर एनी ऑफ दिस ट्रेंड लाइन गोज अगेंस्ट आवर लॉजिक. अब नाउ फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल इज जीडीपी का ट्रेंड लाइन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड लाइन एंड फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड लाइन आर गोइंग अगेंस्ट आवर लॉजिक. तो अगर ये स्टेटमेंट में आएगा तो उसको इनकरेक्ट नहीं कंसिडर करना. बाकी चीज़ें अगर देर इज अ स्टेटमेंट दैट सेज कि this and this is steadily increasing or steadily decreasing, there is very high chance that the statement is incorrect. ठीक है. उसके बाद और एक लॉजिक है in polity questions that if the question says कि constitution defines the term, ऐसा अगर कोई statement है, it is mostly incorrect. Now if you look at this question of 2024 prelims only, the second statement says that article 335 of Indian constitution defines the term efficiency of administration. ठीक है. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ डिफाइंस द टर्म होगा तो वो गलत होगा. अगर इसको गलत कंसिडर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यू आर रीचिंग टू द आंसर. ठीक है. ये 2024 में भी यूज हुआ है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021 प्रीलिम्स. हियर आल्सो द लॉजिक दैट इफ there is a statement that constitution defines the term, ऐसा कुछ आया है, it is mostly wrong. If you look at the third statement here, it says constitution of India defines civil and criminal contempt. Now it is incorrect. अगर इसको incorrect consider करो, automatically you are eliminating two options. अगेन 50-50 तक आपका चांसेस पहुंच गया है, आपका एक्यूरेसी का चांसेस बढ़ चुका है. नाउ इफ यू लुक एट द रिमेनिंग स्टेटमेंट, इसमें हमको पता चल रहा है ऑप्शन से कि 1 and 2 तो सही होने ही चाहिए. लेट अस थिंक अबाउट द फोर्थ स्टेटमेंट. इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड with the power to make laws on contempt of court.
which is very logical. Most of you must be aware about the Contempt of Court Act of 1971. तो अगर law है that means parliament के पास power है. So B should be the answer, and that is the correct answer. Similarly, there was a question in 2019 जिसमें एक स्टेटमेंट था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कंसिडर कर रहे थे, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू रीच टू द आंसर. टू कीप दिस इन माइंड कि if there is a statement that says constitution defines so and so term and you are not aware about it, so it is mostly wrong. ठीक है. उसके बाद again one more logic that stands true throughout years of my experience in UPSC prelims is that if there is an international organization given in your statement, it is mostly wrong. जैसे if you look at this 2021 prelims का question, ठीक है, ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वेयर इट सेज 21st February इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ. अब अगेन आवर लॉजिक सेज कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, इट इज मोस्टली रॉन्ग. ठीक है. तो इस लॉजिक से अगर आप इसको इनकरेक्ट कंसिडर कर रहे हो, यू आर एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस. अगेन अपना चांसेस आर कमिंग डाउन टू 50-50 विदाउट नोइंग एनीथिंग. ठीक है. अब लॉजिकल भी है, यूनिसेफ क्यों करेगा? ठीक है. ऐसी सारी चीज़ें कल्चर लैंग्वेज के लिए कौन करता है? यूनेस्को करता है. तो यूपीएससी का ये हैबिट है टू चेंज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गिव इट इनकरेक्ट अगेन. वाई? So that no one is able to counter UPSC's answer, no one is able to raise objection against UPSC. So keep this in mind. If there is an international organization given, it is mostly incorrect. So if you read the second statement, the demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in Constituent Assembly of Pakistan. This is वेरी लॉजिकल, वेरी ट्रू. अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, बट लॉजिक कहता है कि 1971 वॉर ऑफ liberation of Bangladesh majorly happened because of the language issue. Bangladeshi people were feeling alienated and Pakistan was trying to impose Urdu on them. That's why second statement should be correct and B should be the right answer, and that is the answer given by UPSC. Again, भले ही आपको कुछ नहीं पता, you are able to come down to 50-50 just by using the logic that international organizations that are given in UPSC ka question are mostly incorrect. Similarly, in 2021's paper, there was a question related to water credit. Now, using our logic that international organizations that are given in statement are mostly wrong, you can see if you read the second statement, it says that water credit is an initiative launched by World Health Organization and वर्ल्ड बैंक. अब अपना लॉजिक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर मोस्टली रॉन्ग. इसको रॉन्ग कंसिडर करोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस एंड रीच टू द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेनेवर देयर इज अ स्टेटमेंट इन क्वेश्चन which says कि this and this is an initiative of these international organization or this is led by this international organization, then it is mostly wrong. तो हमारा नेक्स्ट लॉजिक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर मोस्टली रॉन्ग. ठीक है. इसके बाद there's another thing that UPSC does in its question is something that I call as ulta fulta. अभी उल्टा फुल्टा क्या है? Now UPSC has this peculiar habit of doing one thing कि एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन दूसरे को दे रहा है और दूसरे का डिस्क्रिप्शन पहले को दे रहा है. जैसे ये 2019 का क्वेश्चन है रिलेटेड टू AR एंड VR. अगर आप पहला स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे, it says that in AR a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये VR का है, एंड जो VR के लिए दिया गया डिस्क्रिप्शन है, इमेज generated from a computer or projected onto real life objects or surroundings. This is the description of AR. तो यूपीएससी क्या कर रहा है? उल्टा फुल्टा. जैसे VR का डिस्क्रिप्शन AR को दे दिया, AR का डिस्क्रिप्शन VR को दे दिया, तो ऑटोमेटिकली बोथ 1 and 2 विल बी रॉन्ग. तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं जहाँ पे 1 और 2 आर देयर? सो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना. And now without knowing anything about AR and VR, you are able to reach to the 50-50 accuracy. ठीक है. So always keep in mind, even if you are not aware about anything that is asked in question, try to read the statements and see कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहले वाले का डिस्क्रिप्शन दूसरे वाले में दिया है, दूसरे वाले का डिस्क्रिप्शन पहले वाले में दिया है. सिमिलरली ये 2022 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था विच द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि हाई क्लाउड्स primarily reflect solar radiation and cool the surface of Earth, and low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from Earth's surface and thus cause warming effect. If you look at the description clearly, जो high cloud का description है वो
लो क्लाउड को दिया है और जो लो क्लाउड का डिस्क्रिप्शन है वो हाई क्लाउड को दिया है. तो अगेन उल्टा फुल्टा, ऑटोमेटिकली बोथ विल बी रॉन्ग एंड डी शुड बी द राइट आंसर. दिस इज द राइट आंसर. सो ऑलवेज ट्राई टू सी दिस लॉजिक और सी दिस ट्रैप दैट यूपीएससी सेट्स इन इट्स पेपर कि पहले का डिस्क्रिप्शन दूसरे को दे रहा है, दूसरे का डिस्क्रिप्शन पहले को दे रहा है. ठीक है. उसके बाद अनदर थिंग और ट्रैप दैट यूपीएससी डज इज वर्ड प्ले, स्पेशली इन हिस्ट्री का क्वेश्चन. व्हाट इट डज इज इट ट्विक्स द नेम्स, माइनर ट्विक लाता है टू मेक इट इनकरेक्ट. जैसे ये 2018 का क्वेश्चन है जहाँ पे इट सेज कि फोर्ट विलियम कॉलेज was founded by Arthur Wellesley. Now if you are aware कि Fort Williams College was founded by Lord Wellesley, not by Arthur Wellesley. Arthur Wellesley was brother of Lord Wellesley. तो automatically this should be incorrect. तो again दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं. तो जब भी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोई नाम दिख रहा है, ट्राई टू डबल चेक इट, ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल इट कि ये सही है या नहीं है. सिमिलरली ये 2021 का क्वेश्चन है. इसमें अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, इसमें it says that it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus. Again यहाँ पे UPSC has the habit of doing wordplay. Instead of Muhammad Shah, UPSC has given Muhammad bin. तो माइनर ट्विक क्या है, तो हमेशा हिस्ट्री के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि when there is a name given in the statement, there is very high chance that UPSC does this word play and does a minor tweak to make the name incorrect. तो ये incorrect है. तो अगेन आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो. सो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कीप दिस इन माइंड कि यूपीएससी हैज द हैबिट ऑफ डूइंग वर्ड प्ले. ठीक है. उसके बाद नाउ दिस अनदर लॉजिक दैट आई यूज्ड while solving the paper, it is coherence of options. तो what I mean by this, अगर आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, if there are three statements given A, B and C, there are very high chances कि दो स्टेटमेंट ऐसे होंगे कि उसमें से अगर B सही है तो तीन भी C भी सही ही होना चाहिए. जैसे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2024 रिलेटेड टू PFAS. ठीक है. अब मेरे को एग्जाम में पता ही नहीं था PFAS क्या है. इवन देन आई रेड द क्वेश्चन केयरफुली. इफ यू लुक एट स्टेटमेंट 2 carefully, you can observe it says that it is not easy, PFAS are not easily degraded. ठीक है. हमको पता ही नहीं है PFAS, तो हमको क्या पता होगा whether they are easily degraded or not. And the third statement says कि persistent exposure can lead to bioaccumulation. अब देखो, we have read in bioaccumulation कि अगर bioaccumulation होना है तो the particle should be fat soluble and not easily degradable. तो अगर 3 is correct, so 2 should also be correct. ठीक है. So automatically the correct answer should either have both 2 and 3 or should have none 2 and 3. ठीक है. क्योंकि अगर 3 गलत है तो 2 भी गलत होना चाहिए. तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल ही नहीं है. ठीक है. दैट मीन्स बोथ 2 and 3 आर करेक्ट. ठीक है. तो आवर करेक्ट आंसर विल हैव बोथ 2 and 3 बिकॉज 2 and 3 आर कोहेरेंट. अगर 2 सही होगा तो 3 सही ही होना चाहिए. अगर 3 सही है तो 2 सही ही होना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस and you are able to reach to again 50-50 chance. Now let us look at some another hint given in the question. The question says that these PFAS are used in making many consumer products. ठीक है. और पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, इट सेज दैट PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल. अब दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओनली, राइट. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिंट दे रहा है आपको कि हाँ ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं. एंड क्वेश्चन खुद ही स्टेटमेंट में बता रहा है कि देर अलग अलग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसका एग्जांपल दे रहा है. सो अगेन इट इज अ हिंट गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो दिस शुड बी आल्सो करेक्ट एंड आई मार्क्ड डी एज द आंसर एंड दैट इज करेक्ट. सो again I got this question correct, 2 marks freely without even knowing even a single word about PFAs, just by presence of mind and seeing if there is any coherence between these options. ठीक है. So always keep in mind if there are multiple statements given in a question, try to find such coherence, try to find whether two statements given in the questions are interrelated, interconnected, interrelated. क्योंकि अगर एक सही होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सही होगा एंड उस हिसाब से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होगा. ठीक है. विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट द टॉपिक आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद अनदर लॉजिक दैट इज यूजफुल इन यूपीएससी इज दैट व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस गिवन, अगर दो ऑप्शन सिमिलर साउंडिंग है या पास पास वाले हैं तो ऑटोमेटिकली द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज वन अमंग्स देम. जैसे ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द लाइक टर्म्स ऑफ साइज
of land in medieval times. ठीक है. Now if you look at the options, you can see that option A and option C are very close. मतलब एक ऐसे दिया गया है एंड एक ऐसे दिया गया है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब क्वेश्चन पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ एग्जामिनर इज ट्राइंग टू सेट अ ट्रैप. ठीक है, कि बहुत बारी बच्चों का ये होता है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है ये पढ़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो गलत करने का चांसेस है. तो जो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन है, सिमिलर लुकिंग ऑप्शन है, उसमें ही सही आंसर होगा. तो ऑटोमेटिकली ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए. तो अगेन यू आर एबल टू रीच टू 50-50 विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग. ठीक है, एंड अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ऑटोमेटिकली यू नो कि परगना इज द स्मॉलेस्ट एंड सुबह इज द बिगेस्ट. ठीक है, so A should be the right answer. That is the correct answer. ठीक है. Similarly, if you look at this 2023 question about the concept of small farm and large field, if you look at the question and options, you will see option B or C are similar sounding. Both say many marginal farmers, many marginal farmers. तो it must be related something to marginal farmer. तो automatically ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाने चाहिए. ठीक है, एंड इफ यू रीड देम इन डिटेल कि अब स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है कि मेनी मार्जिन फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू कॉर्पोरेट. अब ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ सच सरेंडरिंग ऑफ लैंड टू अ कॉर्पोरेट. सो दिस शुड बी इनकरेक्ट and you can mark this as the answer, and this is the correct answer. And I got it right without even knowing what is small farm, large field. तो ऑटोमेटिकली सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस अगर है तो उसमें से ही आंसर होगा. कीप दिस इन माइंड. ठीक है, उसके बाद अनदर logic that can be used in UPSC's prelims is something that I call as Slumdog Millionaire logic. अगर आप लोगों ने Slumdog Millionaire मूवी देखी है तो उसमें यू सी that the person gets all the questions correct based on his life experiences, based on the common sense, based on the common sensical understanding, based on street smartness. ठीक है, and this street smartness will help you in UPSC prelims as well. So while solving the paper, do not just limit yourself to the bookish knowledge, do not just limit yourself to the knowledge that you are getting from classes and any other sources. Try to incorporate the real life observation, the real life street smartness while solving the paper. जैसे ये 2024 का ही क्वेश्चन है related to revenue collection by Lord Cornwallis. If you read the first statement, it says that under Raitovari system of revenue collection, the peasant were exempted from revenue payment in case of bad harvest. Now we know British were very exploitative, so why would they exempt like peasants from payment? It seems illogical. British were here to collect as much revenue as possible, to make as much money as possible. So exempting uh, revenue payment is a empathetic act which British will never do. So automatically one should be incorrect. And see, if you are considering it incorrect without even knowing, बस common sense से कि British were very authoritative, no, not at all empathetic, तो एक incorrect होगा. Secondly, the second statement says under permanent settlement in Bengal, if zamindar failed to pay the revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. It seems logical. British were here only to make money. They were not here to make good relations with zamindar. जो zamindar time पे payment कर रहा है उसको वो जमींदारी दे रहे, तो ऑटोमेटिकली दिस शुड बी करेक्ट एंड बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. सो even your common sense without knowing the details about all those acts, you can get the question correctly. Similarly, if you look at this question, I believe it is a question of 2022. इसमें it is a question about R2 code of practices. अब R2 code of practices के बारे में मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था. I had no idea at all about R2 code of practices. Now if you look at the options, it is only option A where you can see two R's, that is responsible recycling. So this R2 should be responsible recycling code of practices, something of these sorts. ठीक है, even in recycling you have read about the 3 R's. ठीक है, reuse, recycle. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली माई कॉमन सेंस इज सेइंग कि R2 है, मतलब ऑप्शन में दो R के रिलेटेड टर्म्स तो होनी चाहिए जो बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है.
So all these options should be incorrect, and I marked A as the correct answer, and that is the correct answer given by UPSC. So try to be street smart while solving the paper. Just by looking at the question, trying to get hints from the question, you can solve a lot of questions without even knowing. Because while solving this paper, I had no idea about R2 code of practices, yet I could get these 2 marks just by looking at the paper properly. Similarly, ये 2021 का क्वेश्चन है related to डिडवाना एंड खाटू, ऑल दीज नेम्स आर रिलेटेड टू व्हाट. अब मेरे को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था ये किसके रिलेटेड है, बट इफ आई when I was solving the paper, I saw the question very carefully and I was able to recall कि हाँ खाटू, तो there is a famous god by the name of खाटू श्याम जी in राजस्थान, तो ये उसी के कुछ रिलेटेड होगा. अब मेरे को पता है खाटू श्याम जी इज अ टेम्पल लोकेटेड इन राजस्थान, तो ऑटोमेटिकली राजस्थान में है तो ग्लेशियर तो होगा नहीं और मैंग्रूव्स भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. एंड रामसर साइट्स और सलाइन लेक बचता है. अब आई हैव द आइडिया ऑफ ऑल द रामसर साइट्स इन इंडिया, जितने भी रामसर साइट थे तब तक आई न्यू ऑल द रामसर साइट, तो ऐसा तो कभी नाम सुना ही नहीं था, तो ये हटा दिया एंड आई मार्क डी एज द राइट आंसर, एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर. अगेन स्ट्रीट स्मार्टनेस, फॉलोइंग द लॉजिक दैट यू आर डेवलप इन रियल लाइफ यूजिंग द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस. सो स्लमडॉग मिलियनेयर जैसा पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है, उसके बाद अगेन द one of the most important skill that is required to score high in UPSC prelims is presence of mind. जैसे ये 2019 के क्वेश्चन है, आई रिमेंबर दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. अब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इतना डिटेल में पढ़ाई नहीं हुआ होता, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 2019 आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट. ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, मेरे को पता ही नहीं है कौन सा हरप्पन है कौन सा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने गया हमें, विच इज आस्किंग अबाउट रान्यो अशोका, मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड. अब इसमें 4 ऑप्शंस है एंड आई कुड सी कि जो सोहगुरा है इसमें मौर्यन पीरियड के इसमें ऑप्शन दिया गया है, दैट मीन्स इट इज नॉट एन हरप्पन साइट इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो इफ यू, सो आई मार्क दिस एज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्राइंग टू फाइंड आउट हिंट्स गिवन इन द पेपर इटसेल्फ टू ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अबाउट विच यू हैव नो आइडिया will definitely help you solve and solve more number of questions and get more marks in UPSC prelims. And through my experience of clearing 6 out of 6 prelims, I am telling you that no one will be knowing more than 30 to 40 questions. Rest all questions you have to solve using all these tricks or all these logics or the street smartness and the real life observations. So make sure you are practicing these logics in your previous year questions from now. And what I will be doing going ahead is that now I will be discussing every year's paper in detail, how to use these logics while solving the paper. And tomorrow onwards I will be uploading one paper daily. We will be starting from 2023. ठीक है, so tomorrow I will be uploading the video of 2023 paper, solving it using logics 22, then 21, 20 till we will try and do it till 19, and if time permits beyond that as well. ठीक है, so stay tuned for this, and always keep in mind that without using these logics, without using elimination tricks, it will be very difficult to solve more questions and it will be very difficult to score good marks. So try and perfect these elimination trick, try and perfect these logics here only, because it takes a lot of guts to implement these in final exam. वरना अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फाइनल एग्जाम में डर लगता है कि भाई ये लॉजिक यूज करूँ ना करूँ. ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग these logics while practicing previous year questions and perfecting these elimination tricks and logics so that it becomes natural, it becomes spontaneous for you while solving the final exam. ठीक है, चलो, all the best.